ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। विदुरोवाच भावे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहदवत्सला विद्वेषमकरोत् कस्मादनादित्यात्मजां सति कस्तं चराचरगुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मा रामं कदन्तेष्टि जगतो देवदम्मदेधदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामादो शशिरस्य च विद्वेषस्वेदप्राणं सत्यचेदुस्त्यजान् सदे मैत्रेयोवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेता परमस्य तथा मरगणा सर्वे सानुगामुनयोऽग्नया तत्र प्रविष्टं शयो दुष्टार्कमिव रोजिषा भ्राजमानभिजमिदं कुर्वन्तं तत्समहसदा उदतिष्ठन् सदसास्ते स्वधिष्ण्येऽभ्यासकाग्नया हृदे विरिञ्चं सर्वं च तद्भासाक्षिप्तचेतसा सदसस्पति वीर्दक्षो भगवान् साधु सत्कृत अजं लोकगुरुं नत्वा निशसादतदाज्ञया प्राङ्निषन्नमृडं दृष्ट्वा नामश्यत् तदनादृता उवाच वामं चक्षुर्भ्यामभिवीक्ष्य दहन्निवा श्रूयतां ब्रह्मस्यो मे सह देवा सहाग्नया साधूनां ध्रुवतो वृत्तं ज्ञानान्न च मत्सरात् अयं तु लोकपालानां यशोग्ना निरपत्रपा सद्भिराचरितपथायेन स्तब्धेन दूषिता येष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुःखदुरगृहीत प्राणिं विप्राग्ने मुख दसावित्र्य इव साधुवद गृहीत्वा मृगशाभाक्ष्य पाणिमर्कटलोचना प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृतनोचितं लुप्तक्रियाया सुजे मानिने भिन्नसेतवे अनिच्छन्नप्यदम्बालां शूद्रायेवौषधिं गिरं प्रेदावासेषु घोरेषु प्रेतेर्भूतगणैर्वृता अडत्युन्मत्तवन्नग्नो व्युक्तकेशो हसञ्जुदञ्जितापस्मकृतस्नान प्रेतस्रङ्स्ति भूषणा शिवो बदेशो ह्यशिवो मत्तो मत्तजनप्रिया अतिप्रमतभूतानं तमो मात्रात्मकात्मनां तस्मा उन्मादनाधाय नष्टशौचाय दुर्हृदे दत्ताभद मया साधि चोदिते परमेष्टिनां मैत्रेयोवाच विनिन्देवं स गिरिशमप्रदीपमवस्थितं दक्षोस्ताप उपस्पृश्य क्रुद्धशब्दं प्रजक्रमे अयदुं देवयजन इन्द्रो विन्दादिविर्भव सहभागं न लभतां देवे देवगणाथमा निषिध्यमानस सदस्य मुख्ये दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापं तस्माद् विनिष्क्रम्य वृद्धमन्योज्य कामगौरव्या निजं निकेतनं विज्ञानशापं गिरिशानुखाग्रणे नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषिता दक्षाय शापं विससर्जदारुणं ये चानुमोदं सदवाच्यदान्दुजा यं एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रत्यद्रुहे दुह्यज्ञप्रतदृष्टिस्तत्त्वतो विमुखो भवेत् गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया कर्मतन्त्रं विदनुते वेदवाद विपन्नते बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मकदिपशो श्रीकामसो सुधिधरां दक्षो वस्तमुखोचिराद विद्याबुद्धिरविद्यां कर्म मय्यामसो जडा संसरन्ति हये चामुमन्यो सर्वावमानिनं गिरश्रुताया पुष्पिण्या मधुगन्धेन पूरिणा मध्ना जन्मदिदात्माना सम्मोह्यन्तु हरद्विषा सर्वपक्षा द्विजावृत्ते दृतवृत्त्या तपोव्रता वित्तदेहेन्द्रियारामयाचका विचरन्तिहा तसेवं ततशापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुप्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्यं भवव्रतधराये च तान् समनुव्रता पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्चास्त्रपरिपन्थिनः नष्टशौचामूढधियो जटावस्मास्तिदारिणा विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सदाशिवं ब्रह्म च ब्राह्मणां सेवा यद् यूयं परिनिन्दता सेदुं विदारिणं पुंसामदपाखण्डमाशुधा एष एव हि लोकानां शिवपन्था सनातन यं पूर्वे जानुसन्दस्तुर्यत्प्रमाणं जनार्दन तद्ब्रह्मपरमं शुद्धं सदां पद्मसनातनं विगर्हयादपाखण्डं देवं वो यत्र भूतराट मैत्रेयोवाच तस्यैवं वदतशापं प्रकोष्ठ भगवान् भव निश्चक्रामदत्किश्चिद्विमना इव सानुगा देवी विश्वसृजसत्रं तः सहस्रपरिवत्सरान् संविदाय महेश्वास यत्रेज ऋषभो हरि अप्लुत्यावृतं यत्र गङ्गा यमुनयान्निदा विरजेनात्मना सर्वे स्वं धाम अयुस्तदा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितां चतुर्थस्कन्धे दशशाखो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।